जय जगन्नाथ फ्रेंड्स समस्त को मोर नमस्कार। तो पेंशन को नहीं आसला एक बड़ अपडेट आपण अर्थ विभाग तरफ एक बड़ अपडेट आसी राज्यर कर्मचारी मानी पेंशन रिविजन को नहीं आसला गुरुत्वपूर्ण ऑर्डर संपूर्ण रूप में वीडियो माध्यम जाना कौन रही अपडेट तेणु शेष पर्यटन निहाती भाव वीडियो देखो जो मैंने चैनल को प्रथम थर नुआ आहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और वीडियो को लाइक करके निज फ्रेंड्स मान सहित बहु मात्रा शेयर करूँ जहाँद्वारा कि इनफर्मेशन समस्त पाखे पहुँच पार और समस्त हेल्पफुल हो पारे। तेज चलते कौन रही अपडेट डिटेल्स जाना देखो ये लेटरटी आपर आसी 29/5/2025 आसी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फाइनेंस डिपार्टमेंट अर्थ विभाग तरफ आसी लेटर नंबर रही 16028 इट सब्जेक्ट देखो ए रेडी रेकनर ऑन द रिसेंट अमेंडमेंट to the OCS pension rule 1992. Finance Department has recently amended the OCS pension rule 1992 by Finance Department notification number 15316 19/5/25 for easy of reference the amendment made are furnished below already reckoner जोटा कि आप देखी पारे ये आप आलियरली प्रोविजन कौन होता है रिसेंट अमेंडमेंट रे कौन आसी जोटा कि आप रूल नंबर 52 रे अच्छी जोटा कि आप द रूल डज नॉट specifically indicate how to treat the day of retirement or death where the employee was absent from duty on leave or otherwise or under suspension. The provision has been modified to the extent that in case where the government servant immediately before his retirement or death was absent from duty on leave or otherwise or under suspension, the day of retirement or death shall be part of such leave or absence or suspension. जोटा कि आप रही आगुरी यहाँ नाला जोटा कि यहाँ कराई आपने देखिपे जदि आपंकर फ्रॉम हिज ड्यूटी जदि से आबसेंट हुई बिफोर हिज रिटायरमेंट पूर्व से डेथ हुए कि आबसेंट हो जाती कि सस्पेंशन हुए द डेट ऑफ रिटायरमेंट डेथ सेल बी पार्ट ऑफ सच लीव और एब्सेंस और सस्पेंशन माने सेटा को पार्ट धरा जीव कोथरे लीव किंबा एब्सेंस और सस्पेंशन ले धरा जीव। तापर देखो 2 नंबर पॉइंट अछि द एक्सप्लेनेशन under this rule provides definition of a departmental proceeding and judicial proceeding. There is provision for sanction of a provisional pension in case of pendency of such proceeding and withholding of final pension and gratuity. এটা আপনার নূয়া যেটা কি আপডেট হয়েছে প্রভিজন হ্যাজ বিন ইনসর্টেড দ্যাট রেগুলার পেনশন গ্র্যাচুইটি এন্ড অদর রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট ক্যান বি স্যাংশন ইফ ম্যাজিস্ট্রেট হ্যাজ নট টেকেন cognizance on the charge sheet filed in the vigilance case. तापर देखो रूल नंबर 34 नो स्पेसिफिक गाइडलाइन एंड टाइम फ्रेम फॉर विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन टेंडर्ड बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ए टाइम फ्रेम ऑफ 90 days फॉर एप्लिकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड 90 दिन पूर्व से एप्लिकेशन देवे रेजिग्नेशन पाई ए टाइम फ्रेम रही जोटा कि आगुरी कौन टाइम फ्रेम नथिला। तापर देखो मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिसीआरजी ऑफ 50 लाख एंड 20 लाख फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड स्टेट जुडिशियल ऑफिसर रेस्पेक्टिवली जो मैंने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय से 15 लाख और जुडिशियल जो अच्छे 20 लाख था डिसीआरजी किंतु मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिसीआरजी हैज बीन एनहांस जोटा कि बढ़ाई दिखाई जोटा कि 20 लाख कराई गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानी स्टेट जुडिशियल ऑफिसर मानी रखाई 25 लाख जोटा कि 1/1/24 रू कार्यकारी हम। तापर देखो देयर वाज नो स्पेसिफिक इंडिकेशन दैट स्पाउस इंक्लूड्स पोस्ट रिट्रियल स्पाउस एंड जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ और हजबैंड एटा को चेंज करे कौन कराई ना पोस्ट रिट्रियल स्पाउस एंड जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ एंड हजबैंड आर इंक्लूडेड विद इन द परव्यू ऑफ अ स्पाउस फॉर द बेनिफिट ऑफ अ फैमिली पेंशन एलिजिबिलिटी ऑफ विडो और विडोर फॉर फैमिली पेंशन शैल नॉट बी अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ हर और हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तापर देखो लिखाई एटा देयर वाज नो मेंशन अबाउट डिपेंडेंसी ऑफ द डिजेबल्ड चाइल्ड और ऑन द एम्प्लॉय और पेंशनर that is the disability in the child occur during lifetime of the employee or pensioner. Now it has been included that if disability of the child existed or manifested before the death of the government servant or pensioner and the disabled child was dependent on the government servant or pensioner then he or she shall be eligible for family pension of life जे माने family pension life में मध्य योग्य होई पारिबे जदि disabled candidate थांती। तापर देखंतु no specific act and rule regarding issuance of the disability certificate was mentioned. A provision has been made regarding according disability certificate in accordance with the RPWD Act 2016 and the RPWD Rule 2017 and on assessment by Appellate Medical Board. अब देखो 8 नंबर पॉइंट अच्छी रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट ऑफ manifestation of disability in a child by the nominee of the government employee or pensioner
এটা যদি দেখন্তু द वर्ड or his or her nominee have been deleted because family pension to disabled child shall be granted based on the dependency of the child on the government employee or pensioner. তারপর 9 নম্বরে আছে দেখন্তু a disabled unmarried daughter was become ineligible for receiving family pension under this sub rule from the date she get married. যেবে সে ম্যারেজ করিব সে ডিজেবল হয়ে যাব. Now change have been made to allow to disabled daughter to avail the benefit of family pension even after he marriage. মানে তার ম্যারেজ পরে বি সে এলিজিবল হই পারিব টু the condition that husband and annual income from all source does not exceed, जोटा कि 5 लाख रु अधिक हो नथिया दरकार ताको हस्बैंड रो कोन जोटा कि इनकम एनुअल इनकम. तापर देखंतु फैमिली पेंशन अंडर दिस सब रूल was to be stopped unless the guardian furnish a certificate to the treasury or bank. If the case may be every month that is he or she not started earning his or her livelihood in case of a daughter that she has not yet married. एठी कोन हेछि देखंतु in place of a change हेछि कोन in place of every month every year has been substituted in as a income certificate are acquired annually. Clause 2 टा कोन हेछि ना clause 2 has been deleted as disabled daughter shall get family pension even after her marriage परे मध्ये रहउछि. तापर देखंतु earlier provision कोन थिला ना widow divorced or disabled widow or disabled divorced daughter beyond the age of 25 year, जोटा कि 25 वर्ष पूर्व जो मान रहउछन्ती widow होंतु disabled widow होंतु किबा disabled divorced होंतु have been extended family pension benefit till their remarriage or death. सेमानकर remarriage किबा death पर्यंत तांकर extend करा होतला family pension को. However there is no mention about dependency of the daughter of the government employee or pensioner. एठी किछि मेंशन नथले सेमानकर dependency ऊपर. एठी कोन काहि specific provision has been inserted that such daughter shall be eligible for family pension if she was dependent on her father or mother who was a government employee or pensioner at the time of death of her father or mother as the case of may be. तापर देखो लिखा है at present family pension to disabled child was paid through guardian except in case of physical crippled son or daughter who has attained majority. Now बर्तमान changes कोन now changes have been made that family pension shall be paid to disabled child who is suffering from any disorder or disability of mind including the mentally retarded through the guardian as if he or she were a minor except in the case of a physical disability child who has attained the age of a majority. तापर लेखन लेखा 13 नंबर पॉइंट रे no provision for remuneration of the person as guardian by the government employee or pensioner for grant of a family pension to a disabled child who is suffering from intellectual disability. A clause has been inserted providing nomination of the person as a guardian by the government employee or pensioner for a grant of family pension in case of a disabled child who is suffering from intellectual disability. In case there is no nomination, the benefit of family pension shall be granted through a guardian on the basis of a guardianship certificate. तापर देखो लिखा है where father or mother is eligible for two family pension is respect of their children who are government servant, maximum amount of the family pension shall be respectively as per the RWSS rule 17, maximum amount of family pension shall be respectively 50% of the highest pay of the government per month in case of two enhanced family pension. जदि दुटा family pension होता है grant ताहले से 50% दे highest pay. तापर लेखो 50% highest pay of the government per month in case of one enhanced family pension other a normal rate. And third number point अछि 30% of the highest pay of the government per month in case of both at normal rate. Parents shall be eligible for the family pension in respect to their children in their monthly income in less than 10,000. एठी आपनकर आलियाली कोन थिला देखंतु आलियाली थिला कि 12000 टंका पर मंथ इन द केस ऑफ टू एनहांसमेंट फैमिली पेंशन बट एबे हेगला 50%. आगो थिला 12000 टंका पर मंथ इन केस ऑफ एनहांस फैमिली पेंशन एंड अदर नॉर्मल रेट एबे हेगला केते सेटा मध्ये 50% हेगला. आ थान नंबर एटा 6000 टंका पर मंथ थिला जो केस ऑफ बोथ नॉर्मल एटा हेगला 30%. एटा पेरेंट पई रहिला जोटा कि 6000 पर मंथ इन द केस ऑफ बोथ द नॉर्मल रेट देयर इज नो प्रोविजन रिक्वायर्ड एनुअल इनकम ऑन द पेरेंट. एनुअल इनकम किछि आवश्यक नाही थिला एबे किंतु हेगला कोन पेरेंट एलिजिबल टू 10000 इनकम जोटा कि आपनकर मंथली ताठार कम होइछा दरकार. तापर देखंतु रूल नंबर 56 रे कोन मैक्सिमम लिमिट टू फैमिली पेंशन डिसेबल टू चाइल्ड शैल बी रेस्पेक्टिवली आपनकर रहिछि देखंतु 12000 टका पर मंथ इन केस ऑफ टू एनहांसमेंट फैमिली पेंशन, 12000 टका पर मंथ इन केस ऑफ वन एनहांस फैमिली पेंशन and other normal rate and 6000 per month in case of both normal rate. As per the RWSS rule 2017, maximum amount of family pension shall be respectively 50% of the highest pay in the government per month in case of two enhanced family pension. एबे गला एटा को 50% of the highest pay government in case of one enhanced family pension and other normal rate and 30% of the highest payment pension government per month. एटा आगु थिला 6000 टका per month जोटा कि एटा हेगला 30%. तापर देखंतु rule 56 15 रही कोन earlier there is no provision in the said rule for giving detail of the family member
after retirement the government employee एटे हैला कोन provision has been included giving opportunity to the retired government employee to give family detail form D with relevant supportive document तापर देखो लिखा है कोन ना तापर लिखा है आपनकर at present a person has two option for family pension from any one source that is either from military service or from civil service एट लिखा है now a person in receipt of pension or family pension from military source shall also be eligible for civil pension or family pension from state government. Military pension, family pension shall be paid for the military service period and civil pension or family pension shall be paid for the civil service period. In this regard, necessary clarification has been issued by the Finance Department number 31425 dated 14/11/24. तापर देखो रही 8 नंबर there was no specific provision for grant of the TI जोटा कि dearness relief on the family pension in the favor of a government employee in receipt of a DA on his or her pay. In this case, provision has been made that dearness relief TI on family pension shall be allowed to the government employee who is getting his or her own pay and a DA. In this regard, जो कि आपन करो डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट 30241 1/11/24 तापर न्यू एडिशन कोन है देखंतु 19 नंबर न्यू एडिशन एटा थिला if any conclusion or ambiguity arise among the provision contained in the first 8 character and next chapter of the OCS pension rule 1992 provision contain first 8 character 8 chapter shall prevail. अब देखो तो there was no provision for giving details of family intimating any addition or alternation in OCS pension form D after retirement of a superannuation. OCS pension form D relating to detail of a family has been modified such that a retired employee can be able to give his or her family detail every after retirement. देखो this ready reckoner is only for purpose of easy understanding for the recent amendment in case of any discrepancy between the contents of the actual amendment made by Finance Department notification number 15316 dated 19/5/25 and ready reckoner provision Finance Department notification shall be prevail over the content of this ready. जहाँ भी आपन डाउट थिला एठी आपन मान क्लियर हेतिबो मो ए नोटिफिकेशन टाको हम टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर कर देबी आपन माने जदी किछि डाउट हैला आपन माने ए पढी के मध्य बुझी परिबे ठीक अछि मु खाली पढी देली जोडा भी डाउट थिबो आपन माने पचारले मध्य मु कमेंट जणे देबी एई थिला आज अपडेट आपन मान पय ओसीएस रूल जहाँ भी चेंज हेछि आपनकर पेंशन को नहीं तो निश्चित भाव में आपंकर क्लीयर हो भिडियो को लाइक करने सहित शेयर करने जमा भूलें चैनल को जो नुआ आसते निश्चित भाव में आपने सब्सक्राइब करेंगे और यार पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अच्छी ना एग्जाम क्रैक बाय प्रदीप टेलीग्राम सर्च करके जॉइन हो पारे रही धन्यवाद जय जगन्नाथ।